Now we are starting with something, another concept. Of course, now this is also relates to your application of partial derivatives. The concept is of now isoquant on constant product curve. So I have already told you in the earlier video that please brush up your concept. So I'll just briefly explain what isoquants are. Isoquants are basically the locus of the point wherein the producer is actually indifferent to the combination of the two factors that they have taken as capital and labor, which would yield the same kind of production to it. यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक मेरा आइसोक्वांट है, एंड ऑफ कोर्स द हायर द आइसोक्वांट द मोर द satisfaction of the producer is, the more the production is. बट इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड लेबर, this combination of land and capital, I'm so sorry, this combination of land and capital, because they are lying on the same isoquant curve, the producer would be indifferent of using either this combination or this combination or this combination or any other combination which is lying here for this production. If this is P1 and P2 and P3, तो अगर किसी प्रोड्यूसर को P1 लेवल की प्रोडक्शन करनी है तो इस पॉइंट पे जितने भी कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो इन यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल के, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के जो है आपको P1 ही प्रोडक्शन देंगी और आपका प्रोड्यूसर भी इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल इंडिफरेंट होगा. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट इज़ व्हाट आइसोक्वांट आर. एंड वी हैव अ सिमिलर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस, जिसको कि हम अपने इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं. वहाँ ये बात चेंज होकर कंज्यूमर के परस्पेक्टिव में आ जाती है. Now there are certain properties of isoquants. They are constant and they're downward sloping. They are convex to the origin. They never intersect, and higher the isoquant, higher is the level of output, like I just mentioned. So ये तो डायग्राम देख के भी पता चल रहा है. They are convex to the origin. They'll never intersect. The higher the level, higher is the production. Then they are convex. So typically सारी properties इसको देख के समझ आ रही हैं. Briefly I've explained. Please brush up your concept and let's move ahead. So P is equals to, again production function is defined as a function of land and capital. So dP is FL dL plus FK dK. This is from your total differential formula, right? So where FL is a partial derivative with respect to L and K is partial derivative with respect to capital. dP equals to 0 for movement along isoquant to y, because that is what we said, that they are indifferent while we are moving. ये जो है ना, यहाँ पे जब हम मूव कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि इस पे जब आप मूव कर रहे हो तो dp मेरा जो है वो 0 है. वाई? बिकॉज वी आर इनडिफरेंट. सो व्हेन वी आर इनडिफरेंट, सो वो जो चेंज है, राइट, dp क्या है, मेरा चेंज है प्रोडक्शन में. और मैं क्या कह रही हूँ कि इस कर्व के अलॉन्ग कुछ भी चेंज नहीं होगा. मेरा प्रोडक्शन हमेशा P1 ही आएगा, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, चाहे यहाँ पे हूँ, चाहे यहाँ पे हूँ, चाहे किसी भी पॉइंट पे हूँ. इफ आई एम इवन गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, माई प्रोडक्शन वुड स्टिल बी P1. So that simply means that the change in production is 0. That is why dp is 0. The change in production is 0. क्यों 0 है? क्योंकि इस ग्राफ पर हर पॉइंट मुझे सेम ही प्रोडक्शन दे रहा है. तो जब हर पॉइंट मुझे सेम प्रोडक्शन दे रहा है यानी कि चेंज इन प्रोडक्शन 0 है. आई जस्ट पुट इट हियर, इस इक्वेशन में रखा, ये आया. तो इसको जब हमने सॉल्व किया, इस dk बाई dl, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. So this is an important thing for all of us to understand. The marginal rate of technical substitution is given by FL by FK, right? And how do we define this marginal rate of technical substitution? It is defined as the number of units of K that a producer is willing to sacrifice for an additional unit of L so as to maintain the same level of production, which is given by minus dk by dl. सो माइनस इसलिए क्योंकि बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है. सो इट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है कि के की कितनी यूनिट्स एक प्रोड्यूसर देने के लिए तैयार है in respect in return of getting just one additional unit of labor is given by marginal rate of technical substitution. So basically ये है कि अगर आपको एक additional unit किसी रिसोर्स की चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरे रिसोर्स की कितनी यूनिट्स गिव अप करनी पड़ेंगी, वो चीज़ आपको ये बताता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. मार्जिनल वर्ड तभी ऐड होता है whenever we are talking about one additional unit. So marginal rate of technical substitution is basically because for one additional unit of labor,
How many of units of capital I'm willing to give away is defined by marginal rate of technical substitution, which we have just defined that it is equals to FL by FK. Okay. Then elasticity of substitution between L and K. So elasticity, like we have already talked about it, always talked about in terms of percentages, right? And percentage means a proportionate change or a ratio change. So इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है आप यहाँ पे नॉर्मल इलास्टिसिटी भी नहीं है, एल और के की सब्सटीट्यूशन की बात है. सो इट सेज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन के बाय एल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन एम आर टी एस. That is how we define the elasticity. What? The change in the marginal rate of substitution, or the change in the ratio given the change in the marginal rate of substitution is what is defined as the elasticity of substitution. और इसको जब ये आगे पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, which is not a great concern to you, जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है, जो हम यूज़ भी करेंगे, कि प्रोडक्शन फंक्शन अगर मेरा लीनियर है और होमोजीनियस है, देन माई इलास्टिसिटी इज डिफाइंड लाइक दिस. ओके, and this is what we're going to use as well. Like it says, find the MRTS and elasticity of substitution for this function. So MRTS और elasticity of substitution, तो उसके लिए मुझे जो भी चाहिए, जैसे elasticity के लिए मुझे FL, FK और FLK भी चाहिए. सो पहले मैंने वही निकाला है, FL निकाला, then FLK nikala, and then MRTS would be the ratio of these two, so that I have, and then this is how I define this. So I get this, and when I solve I get this, right? ये DR कहाँ से आया? ये DR आया है मेरा टोटल डिफरेंशियल वाली टर्म से, ठीक है. So this is from there that I have got this, and when I substitute it I get this as my answer. Another question that I have is the Cobb-Douglas function, which is given like this, and we have to find the MRTS between the factors. मैंने marginal product निकाला है दोनों का. MRTS is MPL upon MK, and we have this. Then another question, show that the isoquants generated by the Cobb-Douglas function are negatively sloped and convex from below when A, alpha are all constant. So पहली चीज़ तो मुझे ये शो करनी है नेगेटिवली स्लोप्ड. तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि उनका जो डेरिवेटिव है बेसिकली वो नेगेटिव होना चाहिए, और कन्वेक्सिटी के लिए भी जो कंडीशन है वो भी हम प्रूव करेंगे. सो पहली बात, मेरा प्रोडक्शन फंक्शन ये था, इसका टोटल डिफरेंशियल लिखा मैंने, एंड जैसे कि मुझे पता है कि आइसोक्वांट पे चेंज इन प्रोडक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, सो आई जस्ट पुट दैट एज ज़ीरो. सो आई गेट दिस, डी के बाई डी एल इज़ दिस. फिर मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला मैंने दोनों का, एंड डी के बाई डी एल जो है मेरा ये आ गया, ठीक है. सो जिसको कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंड इट इज़ लेस देन ज़ीरो. वाई? बिकॉज this both are positive, and K and L, they will be positive, so this is a negative quantity. And so isoquants are downward sloping. From this I have proven that, because dk by dl is negative, so definitely they are downward sloping. And for convexity I will take the double derivative, and that happens to be greater than 0, which again confirms that they are convex from the origin. And you just take it as a condition, because it's a very whole lengthy thing if I'll explain you why convexity is like that. So just understand this, that when you take the double derivative and if it happens to be greater than 0, that simply would show that it is convex to the origin, or they are convex from the below, right?